everyone, I'm Kaushiki Gupta. I'm 18 years old. I'm a second year engineering student. And if you are about to enter college, either engineering college or a 3-year degree course program, then this video is going to be very helpful to all of you because it will help you to not waste your first year. My first point is to reset your mindset. And let me explain that. हमने 12th के boards दिए, हमने engineering entrance exams दिए, हमने JEE, MHT, CT. और if not, if you're going for a 3-year degree course, आपने CUET दिया होगा और different entrance exams to enter college. And whatever is done, it is done and dusted. आपका score अच्छा आया हो, आपको नहीं आया हो, आपको अपना dream college मिला हो, नहीं मिला, just understand one thing, you're going to enter college. सब कॉलेज में उतने ही कंफ्यूज है, उतने ही डरे हुए हैं, उतने ही एक्साइटेड है फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस एंड यू डोंट वांट टू मेक श्योर कि वो रुइन हो आपका बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉलेज इज अ फ्रेश स्टार्ट एंड आपको भी उसको एकदम एक फ्रेश एक न्यू बिगिनिंग की तरह ही देखना है बिकॉज नो बडी नोज देयर, राइट? आप कोई नहीं जानते, आप में भी एक दो दूसरे दोस्त को जानते हो गए पहले से, but you don't know a lot of people and you want to make new memories with new people. So understand, college is a fresh beginning. Start off with a clean slate. My next point is on friends, and for all those introvert people out there, just understand one thing that making friends in college is very easy. Let me tell you how. Because as I said, it's a new beginning. Everybody's just come from a lot of traumatizing experiences and they want to make sure college is the one of the best experience jo unka ho. So you can start with a conversation which is very similar, from very similar background. जैसे in engineering college हमारा first question is about MHT, CT and आपका क्या journey रहा है and what scores and stuff, and that kind of understands कि हाँ आपका भी similar, and when you understand कि वो दूसरा person भी वही के साथ गुजरा है and it is just कि उनको मे भी अच्छा कॉलेज मिला हो, नहीं मिला हो, ड्रीम कॉलेज हो, नहीं, you kind of understand, you get there and you get along. So that is one of the tips on how I can share, how to make friends for all the introverted people out. My third point is to learn coding. And अगर आपको अपने 3rd या 4th year में एक tech placement grab करना है, चाहे आप tech branch हो या non tech branch हो, you have to start learning to code. क्योंकि जितना जल्दी आप कोड करोगे उतने जल्दी आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और आप DSA उतना स्ट्रेंथन कर सकते हो और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो येस, फास्ट एडवांटेज, जो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है वो आपको लेना है, आपको ग्रैब करना है. टाइम का एक एडवांटेज है आपके पास. सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स मिस्टेक्स, start coding earlier. My fourth point is to join a few clubs. Now usually Mumbai University के colleges में, as far as I know, कि आपको clubs में join करना allowed नहीं है in your first year. It's only from second year कि आप कोई भी club में join कर सकते हो. But अगर आप कोई private college में हो या कोई भी college में जहाँ पे clubs allowed है to join, you can join clubs in your first year. Try to join only 1 to 2 clubs. उससे ज़्यादा मत करना club join, क्योंकि club का काम ना आपको बहुत ज़्यादा burden देता है. And in your first year, आप coding, you have your different subjects. You will have graphics in Sem 2, which is really bad, mechanics, BEEE, and to adjust to those subjects वो थोड़ा टाइम लेता है. एंड स्पेशली अगर आप मेरे तरह हो थोड़ा बहुत कि आपने वेकेशन बहुत एंजॉय किया, नाउ यू डोंट वांट टू स्टडी इतना, बिकॉज मेरे साथ वही हुआ था, मैंने वेकेशन बहुत एंजॉय किया था एंड गेटिंग बैक टू स्टूडियस मोड टेक्स लिटिल टाइम. सो इफ आप वैसे हो देन जस्ट जॉइन फ्यू क्लब्स. मैंने तो पर्सनली नहीं ज्वाइन किया था बिकॉज मेरे कॉलेज में अलाउड नहीं है. इन एनी मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज, एज फार एज आई नो, यू कैन जॉइन क्लब्स in second year only. But if you have that option of joining clubs in your first year, join few clubs. My next point is on attendance, क्योंकि majority college में 75% attendance तो चाहिए, it's compulsory. And try to make sure कि आपका 75% attendance हो, क्योंकि I'll tell you one thing, जो term work में marks देते हैं ना बहुत से teachers, वो आपके attendance के एकदम parallelly देते हैं. अगर आपका attendance अच्छा है, 75 above है, 80 above है, then you will get a good mark in your term work. But अब उससे less है तो आपके term work पे भी affect करेगा. So just try to make sure कि आपका 75 plus attendance हो ही, irrespective of what. And that's it for this video. I hope you found it helpful. And ये कुछ चीजें थी जो I wanted to share, just before you're going to college. So I hope it helps you out, guys. Bye and all the best.